आप देख रहे हो आपका मनपसंद चैनल साई केबल। होता है भाजपाचे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार डॉक्टर संतू गांबर्डे व भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपा महायुतीचे अधिकृत उमेदवार ॲडव्होकेट श्रीनाथ अशोकराव चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ या ठिकाणी आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पॉवर स्टार पवन कल्याणजी यांचं हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत। मंच पर अपने मुगल के एमएलए रामराव जी पटेल, अपने एक्स एमएलए अमिता जी भाभी, मित्रांनो आपला उत्साह खूप मोठा आहे। मी या ठिकाणी आपल्याला उपमुख्यमंत्री पॉवर स्टार पवन कल्याणजी यांचा सत्कार करण्यासाठी मी माननीय आपले लोकनेते अशोकरावजी चव्हाण साहेब, आपले नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार डॉक्टर संतोषरावजी आंबर्डे आणि भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या उमेदवार श्रीनाथ अशोकराव चव्हाण यांना विनंती करतो स्वागत करायचं आहे। यानंतर या पाळतच्या भूमीमध्ये स्थापन झाल्यामुळे पाळतच्या गणपती व गावकऱ्याच्या वतीनं त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। मी पवनजी कल्याण यांचा सत्कार करण्यासाठी गणपती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो, लिंगनाजी टोटावाड, रघुवीर बंदलवाड, आसरवाड, साईनाथ नडशेट्टीवार, सरपंच अंजनाबाई जाधव व सर्व गणपती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपण उपमुख्यमंत्री पवनजी कल्याण यांचा या ठिकाणी आपण सत्कार करायचा आहे।
भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या उमेदवार ॲडव्होकेट श्रीराजे अशोकराव चव्हाण यांना विनंती करतो की आपण या प्रचंड अशा जनसंख्येला या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करायचं आहे. आपल्या भागाच्या मंगळराणी अमोलकर आणि ॲडव्होकेट श्रीराजे चव्हाण या पवनजी कल्याण यांचा सत्कार करत आहेत. यानंतर मी विनंती करतो की आपल्या उमेदवार भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार ॲडव्होकेट श्रीराजे अशोकराव चव्हाण यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पात्र आहेत. सर्वात प्रथम इथे या पावन भूमीत विघ्नहर्ताला वंदन करते, महापुरुषांना अभिवादन करते आणि मंचावर उपस्थित आज आंध्र प्रदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसंच पॉवर स्टार खासदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब भोकरचे सुपरस्टार आमदार श्री सूर्यवंशी गुप्तेजी, माजी आमदार अमिताताई चव्हाणजी, आमदार रामरावजी पाटील, माजी आमदार अमरनाथ राजूरकरजी, लोकसभेचे उमेदवार संतोषरावजी हंबर्डे, अमर साबळेजी, किशोरप्पा पाटीलजी, मधुकरजी, प्रवीण गायकवाडजी, गणेश कापसेजी, मंगळराणी अंबुलगेकर ताई, जगदीश पाटीलजी, दिवाकर रेड्डीजी, कल्पनाताई भोसले, रामचंद्र मुसळेजी, नामदेव आयरवालजी, किशोर पाटील लघुतकरजी, विकास देशमुख युवा सेना, राजेश्वर देशमुख राष्ट्रवादी, वेणू कोंडवार युवा मोर्चा, दिलीपराव सोमटाणकरजी, बाळजी सामनवाडजी, बाबूराव सयळकरजी, तसंच लिंगण्णा काटेवाड पाळस गणपती मंदिर अध्यक्ष, जाधवताई सरपंच पाळस, रघुवीर मंडळवार उपाध्यक्ष गणपती मंदिर, सुभाष चाटलवारजी, आनंद नंदीप चट्टीजी, व्यंकटेश आसरवाडजी, गणेश गड्डंबारजी, सुरेश चाटलवारजी आणि मंचावर सर्वच मान्यवर उपस्थित. पवनन्ना पवन कल्याण गारुला नमस्कार. मेरू मरमुंची बीजेपी महायुतिकी గేల్పి అంటానికి వచ్చారు అన్న గురించి మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. आणि इकडे सगळी जी आज पाळस इथे जनता आलेली आहे, अण्णालू अक्कालू अंदरिकी नमस्कार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की येत्या 20 तारखेला आपल्याला मतदान करायचं आहे आणि मतदान आपल्याला महायुतीची सरकार आणि कमळ केंद्रात सरकार आपल्याला आणायची. केंद्रात सरकार तर पहिलेच आलेली आहे, त्यात आपलं पोटनिवडणूक असल्यामुळे डॉक्टर संतोषरावजी हंबर्डे उच्च शिक्षित आहेत, चांगलं आपल्या जिल्ह्याचं नेतृत्व करतील. त्यामुळे माझी अशी विनंती राहील की आपल्या सर्वांनी कमळ ह्या निशाणी समोरचं बटन दाबून यांना जास्तीत जास्त मतं देऊन आशीर्वाद देऊन विजयी करा. आणि तसंच विधानसभेसाठी
पाळसची मुलगी, भोकरची लेक आपल्या समोर आज आपलं आशीर्वाद मागायला आलेलं आहे. सर्वांना माहिती आहे की भोकरचा विकास म्हणजेच अशोकराव चव्हाण साहेब. अशोकराव चव्हाण साहेबांनी केलेल्या विकासाबद्दल जास्त काही बोलायची गरज नाही, दिसून येतं आपल्याला सगळीकडे. विकास पुरुष म्हणून साहेबांना मानलं जातं आणि भरभरून विकास आपल्याला साहेब आणून येतात. तसंच साहेबांची मुलगी म्हणून नाही तर पाळसची मुलगी म्हणून भरभरून विकास आणण्यासाठी मी कमी राहू देणार नाही. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद पाहिजे, आपल्या सर्वांची साथ पाहिजे. त्या 20 तारखेला आपल्याला 2 जागी कमळ या निशाणी समोरचं बटन दाबायचंय. लोकसभेसाठी सफेद रंगाची मतपेटी असणार, त्यांची निशाणी 2ऱ्या नंबरच्या बटनवर आहे आणि तसंच विधानसभेसाठी गुलाबी रंगाची मतपेटी असणार. विकासाचा वारसा शंकरराव चव्हाण साहेबांची 3री पिढी, 3री पिढीचं 3रं नंबरचं बटन समोर आपण जास्तीत जास्त मतदान करा. आपल्या सरकारने चांगले निर्णय घेतलेत, महायुतीच्या सरकारने चांगले योजना, चांगले निर्णय महाराष्ट्रासाठी घेतले. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त विकास कसं करू शकेल या सरकारने नेहमी दाखवलेलं आहे. तसंच इथे मुख्यमंत्री साहेबांच्या लाडक्या बहिणी आहेत की नाही? आहेत की नाही? मुख्यमंत्री साहेबांच्या लाडक्या बहिणी हात वर करा. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आली, युवकांसाठी युवक प्रशिक्षण आलं, शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफ झालं, आरोग्यासाठी आपल्यासाठी वेगवेगळे योजना आले. बरेच काही चांगले निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतले आणि जाहीरनाम्यात सांगितलेले आहे महायुतीच्या सरकारने की जर महायुतीची सरकार परत आली तर लाडक्या बहिणीचे पैसे 1500 वरून 2100 होणार. आणि तसंच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा जे काही योजना आहेत, निराधार योजना आहे, वयोश्री योजना आहे, श्रावणबाळ योजना आहे, ते सुद्धा 1500चे 2100 होणार. बरेच चांगले निर्णय आपल्या सरकारने घेतले, प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त विकास करायचा प्रयत्न केले. त्यामुळे आपल्या सर्वांचा साथ, आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद पाहिजे की येत्या 20 तारखेला भरून भरून तुम्ही सर्वांनी हे जे लोकसंख्या आज आली आहे तसंच मतपेटीवर सुद्धा धडाधड आपल्याला बीजेपीला मतदान करायचंय आणि कमळ या निशाणीला विजय करायचंय. शेवटीला मी एवढंच बोलणार की నేను మీ పుట్టింటి బిడ్డ అవును, నాకు మీ ఓట్లే తీసుకోండి, నాకు मतदान చేసి గెలిపియండి. 2 మషీన్లు ఉంటవి, ఆందార్వి ఖాస్దార్వి ఈదరికి కమలం పువ్వుకు मतदान చేయండి. आपल्या सर्वांचा साथ आणि आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद आमच्या परिवारासोबत नेहमीच राहिलेला आहे. असंच त्या गणपतीरायाकडे सुद्धा प्रार्थना करेल की त्यांनी आम्हाला ताकद द्यावं आणि आपल्या जनतेने सुद्धा आम्हाला ताकद द्यावं आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रत्येक लोकांनी निघून मतदान करावं. येत्या 20 तारखेला आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद पाहिजे. 20 तारखेला कमळ या समोरच्या निशाणीवर आपले खासदार साहेब संतुकरावजी हंबर्डे आणि मला जास्तीत जास्त मतदान करावं. माझं सुद्धा स्वप्न आहे, माझं सुद्धा स्वप्न आहे मी भोकरचा विकास जास्त अजून काय करू शकेल, भोकरसाठी नवीन नवीन काय आणू शकेल, त्यावर माझे प्रयत्न राहतील. लहान लेकरांच्या शिक्षणापासून तरुणांना हातात रोजगार देण्यापर्यंत, महिलांना सक्षम करेपर्यंत, ज्येष्ठांच्या अडीअडचणी दूर करेपर्यंत आणि शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी ही भोकरची मुलगी थांबणार नाही. त्यामुळे येत्या 20 तारखेला आपल्या सर्वांचा साथ आणि सर्वांचा आशीर्वाद मागते की येत्या 20 तारखेला कमळ या समोरच्या बटनचा तुम्ही भरभरून आशीर्वाद द्या. संतुकरावजी हंबर्डेला सुद्धा मला भरभरून आशीर्वाद द्या आणि आपल्या विकासाची गंगा अशीच वाहती राहू द्या. मला बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल थोडं इंग्लिशमध्ये बोलण्यासाठी सांगितलंय.
A few points in English as well then. I have the blessings of my family. I am the granddaughter of Dr. Shankar Rao Chavan. I am the daughter of Ashok Rao Chavan and Amita Chavan. I don't fear anyone. Today a powerhouse and the superstar is with me. So much power and so much power comes from you all. And thus I feel victory is definite. That's why I pray to everyone, and with my humble heart, I request everyone that you all, with your entire heart, soul, mind, on the 20th of November, come and vote for the Kamar, the Lotus, and bring a lot of new development in our Bhokar Matdar Sangh. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra. तिथे येणाऱ्या 20 तारखेला आपल्याला या लाखो मतांनी या ठिकाणी विजयी करण्याचा निर्धार या भोकर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेने केलेला आहे. त्यांच्यासोबतच नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे डॉक्टर संतुकरावजी अंबर्डे साहेब हे देखील प्रचंड मतांनी विजयी होणार आहेत. मी डॉक्टर संतुकरावजी अंबर्डे यांना विनंती करतो की आपण या प्रचंड सभेला या ठिकाणी मार्गदर्शन करायचं आहे. बाळकच्या पवित्र भूमीत प्रथमतः मी गणेशचे चरणी नतमस्तक होतो. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक व नांदेड लोकसभा पोटनिवडणूकच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित भारतात प्रसिद्ध असलेले आणि आंध्र प्रदेशचे माननीय उपमुख्यमंत्री पवन कल्याणजी, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक, ज्यांनी राज्याची धुरा 2 वेळा सांभाळली, ज्यांना विकासाचं विजन आहे, असे माननीय खासदार अशोकजी चव्हाण साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित माजी खासदार अमरजी साबळे, आता ज्यांनी आपलं मनोगत अतिशय चांगल्या शब्दात, कमी शब्दात बोलल्या, त्या भोकर विधानसभेच्या स्वर्गीय विकास पुरुष कैलासवासी शंकरराव चव्हाण यांच्या नात माननीय अशोकराव चव्हाण यांच्या कन्या, व्यासपीठावर उपस्थित संघटन मंत्री एन मधुकरजी, माननीय आमदार रामराव पाटीलजी, माननीय आमदार धनपालजी, माननीय आमदार अमर राजूरकरजी, व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या आदरणीय अमिता भाभीजी, या भागाचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष राजेजी देशमुख, माझ्या अगोदर ज्या आता स्थायींनी जेवढी नावं घेतली ती पूर्ण नावे आणि सन्मान्य 20 व्यासपीठ, आणि आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या परिषदेत उपस्थित झालात, सर्व माझ्या बंधू भगिनींनो, पहिल्यांदा मी पवन अण्णा यांचं या भूमीत मनापासून स्वागत करतो मित्र, आणि आभार सुद्धा मानतो. त्यांनी वेळातला वेळ काढून आम्हाला प्रचारात दिला. खरं तर तुम्हाला खूप मोठी संधी आलेली आहे. केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे आणि आपण निवडून देणारा खासदार हा जाऊन डायरेक्ट सत्तेत बसणार आहे. मित्र, सत्तेत बसल्यानंतर मी माननीय अशोक चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली की नांदेड जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहिली या ठिकाणी एवढंच वचन देतो. कारण म्हणजे तुम्हाला आमचं जास्त भाषण ऐकायची इच्छा नाही आहे. सन्माननीय पवन कुमार यांना ऐकायची इच्छा आहे. तुम्हाला एवढी विनंती करतो मी, येत्या 20 तारखेला, खरं तर आमच्या श्रीजाताई सुद्धा ॲडव्होकेट आहेत, त्यांना तेलुगू येतं, इंग्रजी चांगलं येतं, त्यांना सुद्धा म्हणजे राजकारणाचं बाळ कुठू पिलेलं आहे त्यांनी, शंकररावच्या नात आहेत. म्हणून येत्या 20 तारखेला आपण न शिरता, घरात कुणी न बसता 100% दोन्ही कमळाचे बटन दाबून मोठ्या प्रमाणात आशीर्वाद भरून अशी मी तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यानंतर मी विनंती करतो की आपले महाराष्ट्र के पावर स्टार एक सीएम अशोकरावजी चव्हाण साहब, अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचा
पाळसमध्ये होणाऱ्या या विशाल अतिविराट सभेला या ठिकाणी उपस्थित असलेले आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि सुपरस्टार पवन कल्याणजी, मी त्यांना पवन कल्याण म्हणणार नाही, मी त्यांना म्हणे तुफान कल्याण. उपस्थित मंचावर या ठिकाणी लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उभे राहिलेले भाजपचे उमेदवार संतुकराव हंबर्डे, विधानसभेला भाजपच्या उमेदवार म्हणून या ठिकाणी आपल्याला ज्यांनी मराठी, तेलुगू, इंग्रजी सगळ्या भाषा ज्यांना येतात ते आमच्या श्रीजयाताई, उपस्थित मंचावर असलेल्या अनिताताई, आमदार रामराव पाटील, आमदार अमरनाथ राजूरकर, या ठिकाणी आलेले आमचे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या भागातून आलेले सर्व माझे सहकारी आमदार, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व आमचे मंदाराणी आंबुलकर, जगदीश पाटील, दिवाकर रेड्डी, कल्पनाताई भोसले, रामचंद्र भुसडे, नामदेव आईलवाड, किशोर पाटील दगडूतकर, किशोरप्पा पाटील, विकास देशमुख युवा सेना, राजेश्वर देशमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस, वेणू कोंडलवार, दिलीप सोमकांकर, बालाजी शामलवाड, बाबूराव सायाळकर, अंजनाताई जाधव, सरपंच पाळस, लिंगणा तोटावाड, पाळस गणपती मंदिर अध्यक्ष रघुवीर बंदरवार, उपाध्यक्ष गणपती मंदिर सुभाष छाटलावार, आनंद देशमुख, लक्ष्मण कोकुलवार, सायनाथ नदीम चट्टी, व्यंकटेश आसरवाड, गणेश गंडमवार, सुरेश चटलावार, बाजूच्या आपल्या मतदारसंघाचे आलेले आमचे भाजपचे आमदार रामराव पाटील, या ठिकाणी तेलंगणा, आंध्र प्रदेशहून आलेले सर्व पाहुणे मंडळी, मंचावरील सर्व माझे सहकारी, या ठिकाणी आलेले सर्व माझे पाळस, किनी, आसपासच्या परिसरातून आलेले माझे सर्व या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने तरुणाई, तरुण मित्र, माता भगिनी, लाडक्या बहिणी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांच्या वतीने पवनजींचं मनपूर्वक जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी आपण स्वागत करा. मला अभिमान आहे की आज आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू आणि पवन कल्याण एकत्रपणे भाजपला एकत्र घेऊन समर्थन देऊन आज केंद्रामध्ये एनडीए सरकार जे झालेलं आहे हे सगळे मिळून आज केंद्रामध्ये मोदी साहेबांना एक जबरदस्त ताकद देण्याचं काम ही सर्व माणसं करत आहेत. आणि बघा आपण फायदा कसा झाला की आंध्र प्रदेशला केंद्र सरकारकडून भरपूर पैसा आज मिळतोय, विकासाला कामाला पैसा मिळतोय, विकासाच्या कामाला पैसा मिळतोय. सत्तेमध्ये आहोत, दिल्लीमध्ये मोदी साहेब आहेत आणि मग आंध्र प्रदेशला पैसा मिळतोय. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे महायुती सरकार आणायचंय, आपलं महायुती सरकार आणायचंय आणि महायुती सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला अधिक विकसित करायचं आहे. मोदी साहेबांनी 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या घोषणा केली आहे. भारत विकसित होणार, महाराष्ट्र विकसित होणार आणि आमचं भोकर विकसित होणार, पाळस विकसित होणार. आज या ठिकाणी या परिसराचं जे काही विकास झालेला आहे, आमच्या गणपती बाप्पांनी आशीर्वाद दिला, मला शक्ती दिली आणि गणपती रायाच्या चरणी लाख करून हे सगळं विकास जो दिसतोय तो आमच्या गणपती बाप्पाची कृपा आहे. बोला गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा. या गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादाने अशोक चव्हाण राज्यामध्ये काम करू शकला, भोकरचा विकास करू शकला आणि या गणपती बाप्पा समोर जे नारळ फोडलं विकासाचं, हा सगळा परिसर जो विकसित झाला तो केवळ आणि केवळ मित्र गणपती बाप्पांचा आशीर्वाद, तुमचं प्रेम आणि तुमच्या प्रेमामुळे या भागाचं नेतृत्व करण्याची ताकद
ती गणपती बाप्पाने आम्हाला दिली. हा गणपती बाप्पा ज्वलंत आहे. तेलंगणा, आंध्रा, महाराष्ट्र असा हा सुरेख संगम पाडसला येतो. मैं पवन कल्याण ना म्हणालो, सबसे पहले जाएंगे और गणपति के पास माथा टेक कर आएंगे. आज पवन भाई आले, गणपतीला माथा टेकला आणि आशीर्वाद त्यांच्यासाठी घेतला आणि श्रीजासाठी घेतला आणि त्याचबरोबर आमच्या हंबर्डेसाठी आशीर्वाद घेतला. केंद्रामध्ये काम करणारं सरकार, केंद्रामध्ये काम करणारं सरकार आपल्याला पाहिजे. आणि केंद्रामध्ये सरकार जे आहे, आता मोदी साहेब देशाचे तिसऱ्यांदा आज देशाचे प्रधानमंत्री झालेले आहेत. एक यशस्वी प्रधानमंत्री 15 वर्ष 10 वर्ष गेली आणि पुढची 5 वर्ष सुद्धा मोदी साहेब आहेत. मला सांगा, आपल्याला खासदार केंद्रात पाठवायचा आहे, तो मोदी साहेबांना मदत करणारा पाहिजे की नाही? बोला, मोदी साहेब मदत करणार असलं पाहिजे की नाही? आणि म्हणून संत तुकाराम हंबर्डे मोदी साहेबांचे खासदार म्हणून दिल्लीला पाठवा आणि आपल्या भोकरचा विकास करा, आपल्या नांदेडचा विकास करा, आपल्या क्षेत्राचा विकास करा. श्रीजया विधानसभेला उभी आहे. श्रीजयाला आपण ऐकलं, तेलुगू बोलते गेलं तुमच्यासारखी. मला येत नाही तेलुगू बाबा, तिलाच येत, मला काही शिकवत नाही. पण ती तुमच्या बरोबर राहिली, बोलली, भेटली. आज कुंचम मला सुद्धा थोडस तेलुगू येत आहे. मला घरी जाऊन शिकवते, बाप्पा तेलुगू असं सोपं आहे, तुम्ही शिका. आता म्हणलं भाऊ जरूर शिकतो, तुम्हाला शिकव आणि आपण या भागामध्ये आमच्या तेलुगू मित्रांना तेलुगूमध्ये बोलू, मराठी लोकांना मराठीत बोलू, आमच्या इथल्या तमाम माझ्या नागरिकांना ते जी भाषा ते बोलतात त्या पद्धतीने आपण त्यांना या ठिकाणी बोलू. आणि म्हणून मला एवढं सांगायचं आहे मित्रहो, महाराष्ट्रामध्ये शिंदे सरकार, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर मला सांगा, लाडक्या बहिणीला 7,500 रुपये अकाउंटला मिळाले की नाही? हातवर करा, मिळाले की नाही? बघा, लाडक्या बहिणीच्या अकाउंटला 7,500 रुपये महायुती सरकारने दिले. शेतकऱ्यांना वीज बिल लागत नाही, झिरो बिल आलाय. झिरो बिल म्हणजे तुमचे पैसे सरकार भरते आहे. 7.5 हॉर्स पॉवर साठी जो बिल येतंय ते सरकार भरते. आणि युवकांना प्रशिक्षणासाठी आज या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी 6,000, 8,000, 10,000 रुपये आमच्या तरुणांना दिले जात आहे. या भागातली जनता, मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, महायुती सरकार निवडून द्या. तुमचं कर्ज जे काय असेल, आपलं सरकार तुमचं कर्ज माफ केल्याशिवाय राहणार नाही, हे राज्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. कर्ज राहणार नाही, पैसे मिळतील, प्रशिक्षणाला फायदा होईल आणि तमाम गरीबाला आपल्या जीवनामध्ये सुखाचे, समाधानाचे आणि आनंदाचे दिवस आगामी काळात येण्याशिवाय राहणार नाही. आता बघा, काँग्रेसवाल्यांनी काय सुरू केलंय? आज काँग्रेसवाल्यांनी रेवंत रेड्डीचा फोटो आणि म्हणतात रेवंत रेड्डीला बघा आणि मतदान करा. त्या ठिकाणी दिल्या, आज सगळे बंद झाले. काँग्रेसच्या राज्यातल्या दिलेल्या गॅरंट्या बंद झाल्या. लाडली बहीण बंद हो गई, रयत बंधू योजना बंद झाली. तेलंगणामध्ये सुरू झालेल्या सगळ्या योजना बंद करून टाकल्या. तिकडे कर्नाटकामध्ये सगळ्या योजना बंद झाल्या आणि हिमाचलमध्ये त्या योजना बंद झाल्या. म्हणजे सांगायचा उद्देश एवढाच आहे मित्र हो, की सगळ्या बंद होतात, परंतु पैसे मिळतात, ऍडव्हान्स मध्ये पैसे मिळतात. सरकार आल्यानंतर सुद्धा या योजना चालू होणार आहेत. म्हणजे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री जे फेल झाले प्रशासनामध्ये, त्यांनी येऊन इथे मतं मागणार, आमच्या भोकरला रोड शो करणार, तुम्हाला अंगठा दाखवणार आणि मतं मागणार. हे चालेल तुम्हाला?
आणि म्हणून मला सांगायचं आहे की तेलंगणाचा मुख्यमंत्री हा काही मुख्यमंत्री राज्य करणारा प्रशासन करणारा मुख्यमंत्री नाही आहे. आमचे प्रधानमंत्री देशाच्या सर्वोच्च प्रधानमंत्रीपदी बसून मोदी साहेब सामान्य माणसाचा आम्ही सेवक आहोत, प्रधान सेवक आहोत म्हणून त्यांनी भूमिका घेतली, अगोदरच घेतलेली आहे. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोकांमध्ये गैरसमज पसरवला गेला की मोदी संविधान बदलणार, संविधान रद्द करणार, आरक्षण जाणार, एससीचं जाणार, एसटीचं जाणार. झालं काय? आरक्षण रद्द झालं का? संविधान बदललं का? सगळ्या खोटा नॅरेटिव्ह, सगळ्या खोटा अपप्रचार करून जनतेची मतं घेतली आणि तुम्हाला फसवलं. बघा कशी नियती आहे, बघा कशी नियत. बघा आज मोदी साहेबांच्या चुकीचं तुम्ही अपप्रचार केला तर मोदी साहेबांना काही फरक पडला नाही. लोकांनी मोदी साहेबांना प्रचंड बहुमतात निवडून दिलं. आणि पहिलं काम मोदींनी काय केलं असेल, संविधानाजवळ गेले आणि नतमस्तक होऊन पाया पडले संविधानाच्या. आणि मनापासून मोदी आणि आमचे लोक, आमचं सरकार, केंद्रामधलं सरकार असो राज्य सरकार असो, संविधानाने काम करणारं सरकार आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रत्येक निर्णयाला बांधील असलेलं आपलं सरकार आहे, संविधानाला बांधील असलं आपलं सरकार आहे. मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, एससी आणि एसटीचं आरक्षण आम्ही त्याला संरक्षण दिलेलं आहे आणि देणार आहोत. कधीही बदलणार नसणारं आमचं सरकार. एससीचं आरक्षण कायम राहील, एसटीचं आरक्षण कायम राहील, संविधान आमचं कायम राहील. हे मोदी साहेबांचे शब्द आहेत. आणि म्हणून बदनामी करून खोटं नाटक पसरू नका, सरकारला बदनाम करू नका. मोदी साहेबांचे हात मजबूत करा आणि पुढील 5 वर्षामध्ये बघा ज्या पद्धतीने मला तुम्ही संधी दिली, या भोकरचा कायापालट झाला, या महाराष्ट्राचा कायापालट झाला, या देशामध्ये मोदींची ताकद आली. आपण पुढील 5 वर्षामध्ये हा पाळतचा परिसर, भोकरचा परिसर, मुदखेड अर्धापूरचा परिसर याचा विकास निरंतर पुढे चालू ठेवायचा असेल तर श्रीजयाला चांगल्या मताधिक्याने कमळावर निवडून द्या अशी हात जोडून विनंती. इथे बसलेल्या माझ्या तमाम सहकार्यांना जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी श्रीजयाला आपलं समर्थन द्या. जोरदार टाळ्यांनी श्रीजयाला आपण समर्थन द्या. आपला आमदार सुशिक्षित, समजणारा, बोलणारा, सभागृहामध्ये आपले विषय मांडणारा आणि आपल्या बाजूने भूमिका घेणारा. आणि म्हणून हात वर करा, श्रीजयासाठी हात वर करा, श्रीजयाला समर्थन द्या आणि श्रीजयाला काम करण्यासाठी संधी द्या. चिंता करू नका, मी तुमच्या बरोबर आहे. आता काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केले अशोक चव्हाणांच्या विरोधामध्ये 18 किंवा 19 तारखेला एक चार्जशीट दाखल करणार आहे. अशोक चव्हाणांनी म्हणे भोकरचा विकास काहीच केला नाही. अरे हाताच्या कंगनाला कधी आरशाची गरज पडत नाही. भोकरवाल्यांनी सगळं पाहिलंय, माझ्या भोकरच्या लोकांनी सगळं पाहिलेलं आहे. अशोक चव्हाण जो बोलता है वो करके दिखाता है. अशोक चव्हाण जे बोलतो ते करून दाखवतो. म्हणून सामान्य माणसाचा विश्वास माझ्यावर आहे. तुम्ही येणार, खोटं बोलणार, भाषण करणार आणि परत तेलंगणाला जाणार. वापस जाओ तेलंगणा. इथे येऊन महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये बिघाड करू नका, महाराष्ट्राच्या लोकांमध्ये खोटं बोलू नका. आणि अशोक चव्हाणला जेवढ्या शिवाय द्याल तेवढी जास्त मतं श्रीजयाला मिळणार आहेत, सतमुखला मिळणार आहेत मित्र. आणि त्यामुळे पवन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने राजनीति में तो काम कर ही रहे, पर फिल्मों के जरिए आपने पूरे देश में संदेश दे दिया है सुपरस्टार क्या होता है. यांनी 2007 मध्ये कॉमन मॅन प्रोटेक्शन फोर्स सुरू केला. सामान्य बघा, एक एवढा मोठा उंचीचा माणूस, एक सुपरस्टार, एक राजकारणी, व त्यांनी सुद्धा आता नाही 2007 पासून त्यांनी कॉमन मॅन प्रोटेक्शन सुरू करून धर्मदायी संस्था स्थापन केली. त्यांनी अनेक लोकांना आपत्ती निवारण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, शेतकरी कल्याण, सैनिक कल्याण
पासपोर्ट्स, वृद्धांची काळजी, अनाथ कल्याण, कला, साहित्य, मंदिर या विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. आणि म्हणून मला सांगायचं आहे, जो माणूस सामान्य माणसाची कामं करतो, गरिबाला न्याय देतो, तो खरा सुपरस्टार आहे. म्हणून जनसामान्यामध्ये आज पवन कल्याणला आम्ही इथे आणलं, 2 कारणासाठी आणलं. ही तरुण आमची सर्व तरुण वर्ग आहे, त्याला कोण आवडतं तर पवन कल्याण. आणि पवन कल्याणला कोण आवडतं? श्रीजया चव्हाण आणि संतू गंभीर्डे. बरोबर आहे की नाही? म्हणून गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं, आशीर्वाद घेतला आणि तुमच्या समोर ते आता 2 मिनिटं बोलतील, आपलं मार्गदर्शन करतील. मित्रांनो, फिर एक बार पवन कल्याणचं जोरदार स्वागत, जोरदार टाळ्यांनी त्या ठिकाणी स्वागत करा. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बोला भारत माता की वंदे. जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी, संतांची भूमी, वीरांची भूमी म्हणजेच महाराष्ट्र. या भूमीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, संतांना, वीरांना नमन. आणि माझ्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना प्रेमपूर्वक नमस्कार. मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं इस भाषा का सम्मान करता हूं, और उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा. पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येता आलं याचा मला आनंद आहे. राम राम महाराष्ट्र. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మహారాష్ట్రకి రాగానే హర హర మహాదేవ్ అనే మంత్ర ఉచ్చారణతో వాతావరణం పులకరించిపోతుంది. ఇక్కడికి విచ్చేసిన జీజాబాయ్, సావిత్రిబాయ్, శివరాయల వారసులకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. అలాంటిది మనం ఈరోజు మహారాష్ట్ర గడ్డపై ఉన్నాం. ఇది రైతు కూలీలకు చెందిన నేల. జొన్న, మినుము, పత్తి విరివిగా పండే నేల. हिंदू हृदय सम्राट श्री बाळासाहेब ठाकरे हिंदू धर्मानिकी पुनादुలు వేసిన నేల. అలాంటి గడ్డ మీదకి వచ్చినందుకు, నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు అశోక్ చౌహాన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఇన్ని భాషల్లో మాట్లాడాలంటే తల తిరిగిపోతుంది.
I'm telling them to speak in many languages like. मैं मंदिरों की पवित्र धरती होकर जहां मां सीता के पावन चरण पड़े, मैं इधर सिर झुकता हूँ। ये वो धरती है जिसे सत्य गणपति शीतला देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सिर झुकता हूँ महान साधु संत पसंद संत जीवनदास महाराज, संत सूर्यकांत महाराज और कृष्ण महाराज जोशी और उनका अनुयायियों की इस पवित्र भूमि को। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का। साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री अशोक चव्हाण जी का, डॉक्टर श्री सच्चे कुमार यादव जी का, लोकसभा एमपी अभ्यर्थी डॉक्टर संतुकराव हंबर्दे जी, and daughter of who comes from a విశిష్ట పరంపర, మూడవ తరం అలాంటి విశిష్ట పరంపర నుంచి వచ్చిన కుమారి శ్రీ అశోక్ చవాన్ గారి పుత్రిక కుమారి శ్రీ జయ అశోక్ చవాన్ గారు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి భోకర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి, అలాగే శ్రీ నమస్కారాలు తెలియజేసి అమరాంత్ రాజుగారు గారికి ఎమ్మెల్సీ విధాన పరిషత్, అలాగే శ్రీ రామరావు పాటిల్ ముద్దోల్, శ్రీ కిషోర్ దేశ్ముఖ్ గారికి బీజేపీ నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందాక బెంగళూరు నుంచి వస్తా ఉన్నాను, అక్కడ ప్రజలతో చెప్పాను, కేవలం ఓట్లు అడగడానికి రాలేదు, వీరులు పుట్టిన మరాఠా నేలకు गौरव करना। जैसे कि मैंने बेंगलुरु की जनता से कहा था, मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं आया हूँ मराठा वीरों की धरती को नमन करने। इसलिए मैं स्वराज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। उन्हें जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली राजमाता जीजाबाई को नमन करता हूं। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। मेरे एनडीए के साथ बिताए 10 वर्षों में, जैसे कि मैंने बेंगलुरु भी मैं बताया कि एनडीए विगत 10 वर्षों में महाराष्ट्र को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुत सी योजना लेके आई है। चाहे किसानों की फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान योजना हो, हमारी महिला के लिए लाई गई मुद्रा योजना हो, 11,000 किलोमीटर के हाईवे दिए और इन 10 सालों में भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा किया है। इसके साथ ही हमारे बहनों के सम्मान में एनडीए इन 10 वर्षों में कई योजनाओं को
लेके आई है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और महाराष्ट्र की बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए लड़की वाहिनी योजना। मैं पिछले दशक में जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर, राम मंदिर से शोभायमान अयोध्या, विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ते हाईवे, हर गांव में पहुंची सड़क, हर गांव में पहुंची बिजली, हर गांव में पहुंची नल और जल। जैसे न जाने कितने कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र को ఆడబిడ్డల కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈ 10 సంవత్సరాల్లో సుకన్య సమృద్ధి యోజన, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన మరియు లడ్కీ వాహిని యోజన వంటి అనేక పథకాలను అమలు చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఆడబిడ్డలను స్వయం సమృద్ధిగా చేయడానికి 21 నుండి 65 సంవత్సరాలు ఉన్న 21 సంవత్సరాలు ఉన్న ఆడపిల్లల నుంచి 65 సంవత్సరాల ఉన్న తల్లుల వరకు నెలకు 1500 రూపాయలు అందజేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 1,12,00,00,000 దరఖాస్తులు వస్తే వాటిలో 1,66,00,00,000 దరఖాస్తుల ఆమోదం కూడా జరిగిపోయింది. గడిచిన దశాబ్ద కాలాన్ని ఒకసారి ఇక్కడున్న యువత గమనిస్తే ఆర్టికల్ 370 తర్వాత కశ్మీర్ కనిపిస్తుంది, దివ్య రామ మందిరంతో అలంకరించబడిన అయోధ్య కనిపిస్తుంది, ప్రపంచ పటంపై రెపరెపలాడుతున్న తిరంగా కనిపిస్తుంది, దేశం నలుమూలలను కలిపే రహదారులు కనిపిస్తున్నాయి, పల్లె పల్లెకు విస్తరించిన రోడ్లు కనిపిస్తున్నాయి. 2028 నాటికి మహారాష్ట్రను 1,00,000 కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దేందుకు, తద్వారా మీ అందరికీ ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చేలా, మీ అందరూ అభివృద్ధి చెందేలా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాం. భారతదేశాన్ని 5 లక్షల ట్రిలియన్ల జీడిపితో ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడంలో మన మహారాష్ట్ర నేల బాళాసాహెబ్ ఠాక్రే కలల కన్న నేల, పుట్టిన నేల, నడిచిన నేల. ఈ నేల కీలక పాత్ర పోషించబోతుంది. ఇందుకోసం మహాయుతి ప్రభుత్వం బోకర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. దీనికి కారణంగా స్థానిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉంది. ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ట్రాఫిక్ను సులభతరం చేయడానికి సరికొత్త ఫ్లైఓవర్స్ మరి రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నాయి. నేను వకీల్ సాబ్ అయితే సినిమాలు అయితే రియల్ వకీల్ సాబ్ కుమారి శ్రీ జయ అశోక్ చవన్, మనం వకీల్ సాబ్ని గెలిపిద్దామా లేదా? మనం వకీల్ సాహెబాన్ని గెలిపిద్దాం. అశోక్ చవాన్ గారి పరంపరని వారి నాన్నగారు అప్పర్ భగీరథ్ అంటారు. ఎండిపోయిన నేలకి, నీళ్లు రాని నేలకి నీళ్లు తెచ్చి నేల ఈరోజు పంట పొలాలు సస్యశ్యామలంగా ఉన్నాయి. ఈ బోకర్ నియోజకవర్గంలో ఉంటే చవన్ గారి నాన్నగారు వాళ్ళు తరతరాలుగా చేస్తున్న కృషి. ఆ నేపథ్యంలో కుమారి జయ శ్రీ జయ అశోక్ చవాన్ గారిని ఈ ఎన్నికల్లో ఇంకో 2 రోజులు వస్తున్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కమలం గుర్తు
కమల్ చిహ్నం మీద బలంగా ముద్రేయండి. శ్రీ జే అశోక్ చవాన్ గారిని మనం గెలిపించాలి. మనం కేవలం చప్పట్లు కొడితే సరిపోదు, నిలబడాలి, ఓట్లు వేయాలి. అలాగే సంతూక్ రావు అంబడే గారికి లోక్సభ ఎంపీగా మధ్యంతర ఎన్నికలు వచ్చినాయి. వారిని నాందేడ్ మన ఎంపీగా నిలబడుతున్నారు. మన నియోజకవర్గం ఓట్లు కూడా వారికి మనస్ఫూర్తిగా మనందరం వేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. నేను ఇందాక అశోక్ చవాన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఏటా కొంత మొత్తాన్ని అందజేస్తుందని చెప్పారు. మీరందరూ చాలా మంది పక్కన తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు. జై తెలంగాణ. మీకు తెలుసు కదా, నా తెలంగాణ అంటే గుండెలా పట్టుకుంటుంది. నాకు ఇష్టమైన పాట తెలుసు కదా, బండెనక బండి గట్టి 16 బండ్లు గట్టి ఏ బండిలో ప్రతాప్ పడకు నిజాం సత్యమూడ. అలాంటి ఊరుగడ్డ తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు మీరు. మహారాష్ట్రలో ఉన్నా, బోకర్లో ఉన్నా, మీరు గుండెల్లో మరాఠా శౌర్యాన్ని నింపుకున్నారు, తెలంగాణ పోరాట స్ఫూర్తిని నింపుకున్నారు. మనందరం మన ఎంపీ, మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులకు నిలబడాలి. కాంగ్రెస్ మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఇది నిజంగా ప్రజల పట్ల నిబద్ధత, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, కేవలం అధికారం కోసం అని. మహావికాస్ ఆఘాది అనే ఈ విభజించే పాలించే విధానంలో మనం బందీలు అవ్వకూడదు. మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి పదంలో పయనించాలంటే సుస్థిరత ప్రభుత్వం కావాలి. కాబట్టి కేవలం మహారాష్ట్రనే కాదు, దేశం మొత్తాన్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకెళ్ళగలగలే నాయకత్వం ఎక్కడుంది? అందరినీ కలుపుకెళ్లే నాయకత్వం ఎక్కడుంది? ఎవరిలో ఉంది? మోడీజీలో ఉంది. వారికి మనం మద్దతు తెలపాలి. ఎక్కడ స్థిరత్వం ఉంటుందో అక్కడ సమర్థ పాలన ఉంటుంది. మనందరం మరాఠీ, తెలుగు, కన్నడ అనే భావాలను అధిగమించి కలిసికట్టుగా దేశం కోసం ముందుకు సాగాలి. మనం భారతీయులం. ఇదే మన హృదయాల్లో మొదటి ఉండాల్సిన బలమైన భావన. మీరు మరాఠీ, నేను తెలుగు, ఇంకొందరు గుజరాతీ అయి ఉండొచ్చు. కానీ దీనికంటే ముందు మనం భారతీయులం. భారతీయులమా కాదా? భారతీయులుగా దేశం పట్ల గౌరవం, విధేయత కలిగి ఉండటం మన కర్తవ్యం. ఎన్డీఏ కూటమి కూడా ఇదే భావనను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఐక్యంగా ఉంటేనే మనం ముందుకు సాగుతాం. చిన్నప్పుడు మనం కథ చదువుకున్నాం, కర్రల్ని కలిపి ఉంచితే ఒక్కొక్కటిగా అది సీర కొట్టచ్చు. కానీ మొత్తం ఆ కర్రల్ని మొత్తం ఒక చోట పెడితే ఎవరిని విరగొట్టడం సాధ్యం కాదు. మనం ఎవరైనా కావచ్చు, ఏ కులమైనా కావచ్చు, జాతి మత భేదం లేదు. అందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే దేశం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మోదీ గారి నాయకత్వంలో బలంగా ఉంటుంది. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, ఇదే మన నినాదం. భారతదేశం ఎప్పుడు వివక్ష చూపలేదు. ఇప్పటికీ మన సినిమా పరిశ్రమలో సూపర్ స్టార్స్ హిందువులు కాదు. ఒక ఆమీర్ ఖాన్, ఒక సల్మాన్ ఖాన్, ఒక షారూక్ ఖాన్ మన గుండెల్లో పెట్టుకున్న ఈ దేశం అబ్దుల్ కలాం గారిని గుండెల్లో పెట్టుకుంది. మనకి హిందువులు లేదు, ముస్లిం లేదు, క్రిస్టియన్ లేదు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్. మన దేశ ప్రజలు
సనాతన ధర్మాన్ని నమ్మే ప్రజలు అంధాన్ని ఆరాధిస్తారు. అయితే ఇదే ఉదాహరణ పాకిస్తాన్లో దొరకదు, బంగ్లాదేశ్లో దొరకదు, మనకే దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సనాతన ధర్మం నేల. ఈ మరాఠవాడ గడ్డపై కులం పేరుతోనూ రిజర్వేషన్ల పేరుతోనూ విభజించే ప్రయత్నం చేస్తే ఈ మరాఠా వీరుల నేల విడిపోని వంగని వెన్నెముక వంగని వీరుల రక్తం ప్రవహిస్తోంది. शिवरायांनी सांगितले होते की मराठा तितूका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. शिवरायलो छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्र మరాఠా తిటుకను సేకరించి మరాఠా ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్పారు. ఇక నిర్ణయం మీ చేతుల్లో ఉంది. విడిపోయి బలహీనపడతామా లేదా కలిసి బలంగా నిలబడతామా? విడిపోయి మన అస్తిత్వాన్ని ప్రమాదంలో నెట్టేద్దామా లేదా కలిసి బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించుకుందామా? విడిపోయి అరాచకత్వానికి స్థానం కల్పిద్దామా లేక కలిసి అభివృద్ధి సంక్షేమం వైపు ప్రజలు నడిపిద్దామా? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ప్రస్తావన. हिंदी కొంచెం మరాఠీలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. मैं मराठी, मैं तेलुगु, मैं कन्नड़ वाली भावना से ऊपर आकर साथ में चलना है. हम भारतीय हैं और यह एक ऐसा भाव है जो हमारे दिलो दिमाग में प्रथम होना चाहिए. आप मराठी हो, मैं तमिल हो, कोई गुजराती है, ये सब सच है, लेकिन इससे भी बढ़कर हम भारतीय हैं और हमारा भारतीय होना राष्ट्र के प्रति आधार सम्मान एक निष्ठ होना हमारा कर्तव्य है. और एनडीए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विचारधारा को आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रही है. साथ में चलेंगे, साथ रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे. जैसे एक लकड़ी को गुट्टे से एक लकड़ी निकालकर तोड़े तो टूट जाती है, वही पूरा कट्ठा तोड़ने की कोशिश करे तो नहीं टूटता. ठीक वैसे ही हमारा देश है. जब तक हम साथ है, जब तक हम साथ है सुरक्षित है. जब तक हम साथ है सुरक्षित है. और साथ मिलके मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे ले जा सकते हैं. ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही उदाहरण ले तो हम देख पाएंगे कि एक साथ न होने से वो हिंदुओं का क्या हाल हुआ है. हमने कभी भेदभाव नहीं किया. भारत में कभी भी हमने कभी भेदभाव नहीं किया. अभी भी हमारी फिल्म स्टार के फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स पवन कल्याण नहीं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान. We love our superstars. It's not about a religion, region. It is about all love. We don't differentiate. We don't differentiate whether you're a Muslim or a Hindu or a Christian. As long as your heart is Indian, we love you.
इस मराठवाड़ा की धरती में वीरों का खून है जो झुकेगा ना टूटेगा, ना जाति के नाम पे ना आरक्षण के नाम पे। जोडिया मन अणु जग जेवण प्रगतीन शिवरायांनी सांगितले होते की मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्रात धर्म वाढवावा। हमें बचना है और कमजोर होना है, या जुड़ना है और मजबूत बनना है। हमें बटना है और अपने अस्तित्व को खतरे में डालना है, यह जुड़ना है और उज्जवल भविष्य बनना है। हमें बटना है और अराजकता को फैला देना है, या जुड़ना है और जन कल्याण विकास की तरफ बढ़ना है। हम सोचना है, आपको 2 दिन टाइम है, टेक ए गुड डिसीजन, బలమైన నిర్ణయం తీసుకోండి, మన అభ్యర్థుల్ని గెలిపించండి। ఇంకొక మారు ఇదే మన నియోజకవర్గానికి, పోకర్ నియోజకవర్గానికి మన వాళ్ళందరినీ గెలిపిస్తే మళ్ళీ స్వామివారి దర్శనం, మన వినాయక గణపతి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటూ जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद। हनुमान की, भारत माता की, हनुमान की। बच्चे
आप देख रहे हो आपका मनपसंद चैनल साई केबल।